हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अगेन एक और व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम छोटी सी राइड पे जा रहे हैं। राइड पे चलते साथ साथ फिर कुछ अब बाइक की मैंने चेंजेस भी करवा दी थी। लाइक आपको पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि बाइक में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, तो वो इश्यूज़ भी सॉल्व हो चुके हैं। अब इशू सॉल्व हो चुके हैं। तो बाइक की मैंने क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स जो इंजन का काम था वो मैंने करवा लिया था। तो पहले आप लोग वो वीडियो देख के आएँ, देन आगे व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो अभी ये बाइक को ओपन कर रहे हैं हम। My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो बाइक का इशू ये आ रहा था कि बाइक मिसिंग कर रही थी और एक बंद हो रही थी। बात की तो उसने कहा था कि इसकी क्लच प्लेट्स ना ख़राब हैं, तो मैंने वो क्लच प्लेट्स चेंज करवाई इसकी। तो माशाल्लाह से उसके बाद से बाइक 90% बाइक ओके हो गया था। और जो 10% इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि बाइक जैसे ही 100 क्रॉस करती थी वहाँ 5th गियर में, तो बाइक में हल्की सी बिल्कुल माइनर सी ना मिसिंग आ रही थी बाइक में। तो वो मिसिंग मैंने चेक करवाई, मैंने काफ़ी रिसर्च की। फिर उसके बाद तो मुझे पता ये चला कि इसके एक यूरो सिस्टम लगा होता है जो ऊपर लगा होता है, बिल्कुल यहाँ ना टैंक के नीचे लगा होता है बिल्कुल। तो वो मैंने चेक करवाया। अगेन घर में ही बाइक को खोला और इसका यूरो सिस्टम चेक किया। अब जैसे ही मैंने यूरो चेक किया तो मुझे बिल्कुल यूरो इसका बिल्कुल ही ब्लॉक था। शायद मेरे ख्याल में पहले ओनर ने चेंज नहीं किया था या साफ़ नहीं करवाया था। फिर मैंने बाइक को खड़ा किया घर में, तो 4 दिन यूरो साफ़ किया, इसका क्लीन करवाया किसी से, करवा के इस बाइक को फिटिंग किया। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह के बाइक का बिल्कुल ओके है, इसमें कोई इशू नहीं आ रहा। इंजन वाइज भी मिसिंग मतलब बिल्कुल मिसिंग ना होने के बराबर है। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ बाइक। पहले तो बाइक को ज़रा सा स्टॉप करते हैं और एक टेस्ट रन चेक करते हैं बाइक का। तो अभी हम काफ़ी दूर आ गए हैं। आई थिंक सो अभी हमें वापस बाइक को मोड़ लेना चाहिए और एक टेस्ट रन लेते हैं बाइक का। और यहाँ पे देख रहे हैं बाइक को कोई मिसिंग नहीं, कोई किसी किस्म का बाइक में कोई इशू नहीं आ रहा। तो यहीं से हम वापस बाइक को मोड़ेंगे, चेक करेंगे डबल क्रॉस का कोई चीज़ आ नहीं रही। कोर्स हेलमेट में विजिबिलिटी हमारी लिमिटेड होती है, तो उस लिहाज से हमें दोनों तरफ से देख के मुड़ना पड़ता है।
ऑलमोस्ट 100 टच किया हमने। और रोड हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए यार मुझे ज़रा बाइक को खींच नहीं पा रहा हूँ मैं। और आज ट्रैफिक भी ज़्यादा है तो इस वजह से। और हवा, मेन हवा, हमारी हवा बहुत ज़्यादा आगे से लग रही है। फोर्थ गियर में 100। और अभी मैं बाइक को खींचता हूँ अगेन। फोर्थ गियर में ये 100 जा रहा है तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल फिफ्थ गियर में इसको 115 टच करना चाहिए एंड 80। और फोर्थ गियर वन 105। वन 110। 115। यार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बैग लगी। ओके, बाइक बहुत अच्छा चल रहा है। 115 तक गया बाइक। और अभी हम इसे सॉकेट चेंज करेंगे, देन हो सकता है कि बाइक ये और भी चाहे हमारा, तो 120 क्रॉस करेगा इंशाल्लाह। और एक्साइटमेंट से आपको मेरी आवाज़ का तो अंदाज़ा हो रहा होगा। माशाल्लाह से बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बम्स बम्स बम्स। फक, एक काम हो गया, इशू आ गया। इशू, ये क्या इशू आया है? अच्छा वो मैंने वक्त होते देख लिया, स्पीड का कुछ इशू, ये निकल गई, इसको भी चेंज लगाना पड़ेगा। एंड ये हमारा साइड कवर भी निकल गया था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि गिरा नहीं, कि अगर ये गिर जाता तो फिर हमें इशू होता। खुल जा यार, खुल जा। बट माशाल्लाह से बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है यार, ये बात कन्फर्म हो जाओगी। I'll find you in my dreams. तो अगेन एक रन देंगे बाइक को हम। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर में ऑलमोस्ट 60, थर्ड गियर में 80,
100। तो यार प्रीटी मच ऑफ दिस व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को काइंडली। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
नहीं, हमने इंशाल्लाह इसको किसी ना किसी जगह पे लेके जाएंगे। और मेरा बाइक्स के लिए यार ये प्यार है, लाइक कुछ लोगों के लिए होता है कि बाइक सिर्फ यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं बाइक, लेकिन हम यंगस्टर्स का या जो बाइक रखते हैं उनको पता होगा कि बाइक प्यार होता है यार हमारा। तो ये मेरा फर्स्ट बाइक है, इसी लाइक मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी तो नहीं कह सकता, लाइक मतलब छोटे लेवल पे हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो अभी इंशाल्लाह आगे जाएंगे। अभी नेक्स्ट मेरा प्लान है इंशाल्लाह KPR 200 का। अगर मुझे वो बाइक कहीं से अच्छा कोई सोर्स हुआ तो देन हम स्विच करने का नहीं सोच सकते, मतलब ये बाइक तो मैं रखूँगा ना अपने पास परमानेंटली, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट बाइक है और बहुत सी ज़्यादा जुड़ी होती है फर्स्ट बाइक के साथ। अब इसने हमें तंग भी बहुत किया, ये बात नहीं है, लेकिन तंग करने के साथ साथ इसने हमें कंटेंट भी तो निकाल के दिया ना यार। अब देखो बाइक ख़राब होता है तभी तो, अब ऑफेंस की बात नहीं है, लेकिन बाइक ख़राब होगा तो कंटेंट निकलेगा ना यार। किसकी कॉल आ गई, रुक के देखना पड़ेगा। ये हैं प्लेट्स जो हमने चेंज करवानी है, पुरानी प्लेट्स हैं हमारी। तो ये हैं इसके पुराने जो कि हमने चेंज करना है इसमें। ऐसे रखना होगा। अरे इन्हें साइड तक करना अभी। और वो वाटर चेक है किस तरह की। तो अभी ये बाइक को ओपन कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं बाइक का काम करवाने, जो हमने कल रिसीव की थी क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स और इसकी जो हाउसिंग थी, मतलब क्लच का मुकम्मल इसका काम करवाना है आज। तो आप देख सकते हैं बाइक मतलब अभी ये मिसिंग कर रही है, नज़र आ रही है आपको, ये क्लच की वजह से ही मिसिंग कर रही है। हो गया स्टार्ट। चेयर तो नहीं चली गई। ट्रोल का तो इशू नहीं है।
इशू है पेट्रोल का, बताना पड़ेगा। तो इस गड्डी च कढ़ना पवेगा या तो या बोतल च पेट्रोल ले आना पवेगा। करें खड़ा करने खड़ा करने करें पेट्रोल ले आने तो फिर स्टार्ट करने। गेज दी 14 खराब होया खड़ा। घरें खड़ा करना ही पड़ेगा। मैंने एक बार ला सामान पेट्रोल लेना पड़ेगा तो फिर जाकर ढूंढना। गड्डी च कढ़िया से लीटर ते फिर इंदे च कड्ढने पेट्रोल पाने फिर देखने की हो रहा है। पेट्रोल कट ले The next morning. The next morning. The next day. The next day. The next day. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If
you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you, for I feel the gravity pull and it keeps me away. I would rather be here, lonely in space. I've made up my mind, I just wanna be free. I live my own life in a new galaxy. I wanna be weightless in the silence of the night sky. I wanna free fall into nothing at all. I'm taking the moment, starting all over. I wanna be free and live my own life in a new galaxy. The memories fade, it's easing my mind. And I can finally breathe when I'm closing my eyes. I never realized what I just could do, but now I know I'm better off without you. I wanna be weightless in the silence of the night sky. I wanna free fall into nothing. Taking the moment, starting all over. I wanna be free and live my own life.
hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. La 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 la, oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks,
rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance.